Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to lab number 7. And today we are going to learn about the characteristics of op-amp-based instrumentation amplifier. So, आज हम लोग basically op-amp को as an instrumentation amplifier के तौर पे use करेंगे. ये लैब तकरीबन हमारी लास्ट लैब से मिलती जुलती है विच वाज आवर लैब नंबर 6, जिसके अंदर हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ा था. दिस इज आल्सो काइंड ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर but with high input resistance, high gain, low offset voltage, and common mode rejection ratio. So लो ऑफसेट वोल्टेज इज बेसिकली जो एक हमारे पास आउटपुट वोल्टेज में एक एरर आ रहा है, एक डिफरेंस आ रहा है, वो इसमें हमारे पास काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है. गेन हमारे पास एक अच्छा आता है. ठीक है. कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो अच्छा आता है. कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज बेसिकली व्हेन यू आर अप्लाइंग the same voltage, the same input on both of your terminals, so उनके दरमियान का जो डिफरेंस है, वो एक टिपिकल हमारे क्या कहते हैं ऑपैम्प में ऑब्वियसली इट्स 100%, बट जब आप एक एक्चुअल फिजिकल ऑपैम्प यूज करेंगे इट्स गोइंग टू बी बिटवीन द रेंजेस ऑफ 80 to 100 decibels. So that is your इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर. ओके. सो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर जो है वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है. ओके. और इसमें जैसे हमारी इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं या इंडस्ट्रियल आपके पास जो है वो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ये जहाँ पे हमें बहुत ही टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, तो एज यू गाइस नो कि आप लोगों ने ये डीएमएम्स यूज़ किए हैं. सही है. और आपके पास बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू होनी चाहिए. ओके. प्रिसिशन आपकी बढ़नी चाहिए. प्रिसिशन बेसिकली स्टैंड्स फॉर कि आप जो है वो कितना उसे ब्रेक कर सकते हैं, एज इन मिली वोल्ट्स, माइक्रो वोल्ट्स. ओके. So kind of like that. That is like the more in depth you go, the more precise you are. So that is why this instrumentation amplifier is used, because ये काफी इसके अंदर हमारे पास एक अच्छी प्रिसिशन आती है. अच्छा. so हमारे पास यहाँ पे तीन ऑपैम्प्स हैं, A1 A2, जो कि इनपुट बफर्स की तरह काम करेंगे. बफर्स मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है इनपुट के अंदर अगर किसी भी तरह के जो है वो नॉइज आ रही हो या फ्लक्चुएशंस हो या जो है उसकी कोई भी प्रॉपर्टी हो बेसिकली, सो वो क्या कहते हैं, बफर उनको अटेनुएट कर देता है. ओके. सो you probably have heard about buffers in radio stations and other areas. So हमारे पास चार रेजिस्टेंसेस हैं, सही है. और हम लोग उन्हें आप लोग ज़्यादा बेहतर ये कि वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करें. ठीक है. वेरिएबल रेजिस्टर्स, और उससे होगा ये कि while you're changing your resistance, so you will find out the after effects of that. ठीक है. वैसे तो हमें इस लैब के अंदर रेजिस्टेंस चेंज करने की नीड नहीं है, बट स्टिल. सो अच्छा, ये आपका जो है वो गेन कहलाता है. ओके. इस इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर गेन का फॉर्मूला ये आपको गिवन है, विच इज R4/R3 1 + R2/R1. सो इस तरह आप इस एम्पलीफायर का गेन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, आपको इस सर्किट की जो क्या कहते हैं वी आउट का जो एक्सप्रेशन है वो आपने इस लैब सेक्शन में बना के देना है. डोंट अटैच योर शीट्स विद दिस मैनुअल, जस्ट व्हेन यू नोट योर answer, just paste it here, and that will be all. So let's try it out. सबसे पहले हम DC वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं, आई गेस, and let's see what do we get.
Okay, so we need op-amp first of all. That's okay. Right. अच्छा अब let's give let's power them up. Okay, let's do that. VCC मैं इसे center में कर देता हूँ because all of these op amps are using same voltage. Okay, so we can apply these and common them in between all these three. So particularly 15 volts, 15. Okay, this is fine. Okay, ऐसे ये ज़रा confusing हो जाएगा इसको. Yeah, this is okay, I guess, or maybe just pull this one here. Yeah, okay, that's fine. ठीक है, तो op amp को हमने पावर अप कर दिया है and now it's time for resistances, I guess. Yeah, so मैं यहाँ पे 1K के 4 resistors यूज करूँगा और it's up to you guys कि आप लोग कौन से resistance यूज करते हैं. Okay, by the way, it's not 4 resistance, it's let's count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we have 6 resistance here, and that's our 7. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7 resistance used. Okay then. So now let's do one thing. We may need to copy this as it is. नेगेटिव वाली जो हमारी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वो हमारे R1 से और R2 से कनेक्ट हो रही है कॉमन एंड इसी तरह जो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इनपुट है वो कनेक्ट हो रहा है अगेन विद दिस. Yeah, so okay, now this is not okay. In the end, we have a common resistor here. Which is going to connect with our resistor here. थोड़ा messy बनने वाला है.
not going to enjoy this one. Okay, so yeah, this will be connected to our positive, जहाँ पे there is also a common resistance here, or let's not. Hmm. Acha, now let's track down the outputs. Okay, we have an R3 here and an R4 just connected with this. Hmm. And जो इसका non-inverting pole है, that's common between R3 and R4. Okay, and ये इन दोनों के जो नॉन इन्वर्टिंग पोल्स हैं वो हमारे कनेक्ट होंगे विद आवर voltages. So yeah, let's see how that turns out. Okay, so I think we should try it out with DC voltages first. If that does not go well, then we will again transform it into AC. Okay, multimeter, positive goes in the output, negative goes here. So Bismillahirrahmanirrahim, let's try. Let's see what do we get. And yeah, there we go. We have minus 174.484 millivolts. So हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंसेस की कोई ख़ास वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है, and that is why I have considered all of these as 1 kilo ohms. Oh, by the way, मैंने तो connect ही नहीं किया. Okay, yeah, this goes here pretty much, and this goes between. Oh, obviously, you know, feedback loop जो है that was not complete. So we get 1.72 millivolts. ये this is a really good offset voltage, I can say एक रिजेक्शन रेशियो आप इसे क्या लें, या कॉमन मोड रिजेक्शन हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रही है. सो दोनों वोल्टेजेस सेम है, एंड इन द एंड आउट यू नो गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज बफर्स हमारे पास 1.72 मिली वोल्ट्स का जो है वो आंसर आ रहा है. अच्छा, let's try changing it. Now I'm not sure what kind of an output do we get. Oh, right. दोनों VDD नहीं. We need one VSS. Yeah. ये एक अच्छी चीज़ भी है हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर, दैट अगर आपने जैसे कॉमन करने हैं वोल्टेजेस, सो इफ़ यू यूज़ VCC हियर, आप एक अलग से VCC यहाँ पे लगाएंगे, तो दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वली चेंज होंगी. ओके, जैसा जस्ट लाइक मैंने अभी नीचे VDD की वैल्यू 5 वोल्ट से 3 वोल्ट में कन्वर्ट की थी, सो ऊपर जो थे हमारी वैल्यू वो भी 3 वोल्ट्स पे आ गई थी. सो you see, आप इसे कॉमन कर रहे हैं, even with using the same kind of input. अच्छा, now we have 3 volts and 0 volts, and let's see what do we have. Minus 8.2
-8.997 volts. -8.997 volts. And why are we getting it in negative? Mm-hmm. Positive goes here into negative, and negative goes here. This seems about right. Mm-hmm. Okay, let's try 2 volts. Hmm. So हमारे पास गेन आ रहा है of 2, but yeah, obviously, yeah, that explains it. We're getting a gain of 2 here, almost 2. Obviously, it's more than 2. What is mega ohms? Okay, and 11.755 decibels. 11.557 decibels. अच्छा, यहाँ पे अगर हमारे पास voltage probe हो, so the output here we're getting is 4 volts, and here we are getting 1 volt. So that's how we are getting around 3 volts and 1 volt. Mm-hmm. Right. So 4 volts, and that becomes 3. अच्छा, ये फीडबैक लूप जो है, ये यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, एंड ये यहाँ, ओके, या दैट्स ओके, ठीक है. सो गाइस, हमारे पास, लेट्स जस्ट ट्राई दिस थ्योरी आउट वंस अगेन. जब we have equal voltages, um, we are getting an output of around 1.86 millivolts. Obviously, it's a zero for us. हम लोग इसे एक zero consider करेंगे. But when we have a difference here, let's make it 5. Okay, and yeah, if I'm not wrong, it should be around 2, or no, it should be around 2. से अगर हमारे पास 2 का gain है, so it should be around 4, 5. Okay, because हमारे पास बीच में, okay, yeah, this is equal to 6 volts. And if we again try this out, see, it's मैं actually what we're trying to gain here is के, is this gain proportional, or is this equal for all? Okay, it can be proportional, as हमारे पास when जब difference हमारे पास 1 volts का है, we're getting around 3 volts there. So 3 volts, because obviously हमारे पास जो difference आ रहा है वो 1 volt के equal नहीं आ रहा. So let's try it out again, and I'm going to put here 2 volts. So 3 volts का हमारे पास difference आ रहा है, it should be around 7 or 8. Did it work? No, it did not work.
probably have gain of 1. Again, see, 3 volts, so we're getting a gain of 2 here. अच्छा, 3 volts and 2 volts पे हमारे पास सेम आंसर आ रहा है. When 3 minus 5 we're getting 2, we're getting 3, तो फिर वो गेन इंक्रीज क्यों नहीं होता? राइट. सो एज यू गाइज रिमेम्बर के अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हमारे पास 0 वोल्ट पे 1 पॉइंट समथिंग मिली वोल्ट्स का जो है वो डिफरेंस आ रहा था, एक ऑफसेट आ रहा था, which is very less of course as compared to a typical difference amplifier. So okay. So यहाँ पर हमारे पास डीसी वोल्टेज एज अ डीसी हमारे पास जो गेन है वो काफ़ी प्रोपोर्शनली इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है. सो लेट्स सी कि हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस में जो है वो क्या रिजल्ट निकल के आता है. ठीक है, उसके लिए कॉमन हम यूज़ नहीं कर रहे. सो जैसे लास्ट लैब में हमने स्क्वायर वेव ली थी, 10 वोल्ट्स लूँगा मैं यहाँ पे, और इधर भी स्क्वायर वेव एंड यहाँ पे 5 वोल्ट्स. ठीक है, एडिशन दिस गोज हियर, और फंक्शन जनरेटर के जो हमारे नेगेटिव्स हैं वो कॉमन होंगे. ग्राउंड ओके, हमने एक चीज़ मिस की है जो कि मैं यही was काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड अटैच होना चाहिए था जो कि नहीं हो रहा. अगेन 4 चैनल फंक्शन जनरेटर सॉरी ऑसिलोस्कोप लूँगा मैं, बिकॉज आई वांट टू सी व्हाट आउटपुट वी आर गेटिंग. नहीं, ये यहाँ जाएगा. राइट, बट मैं से ओके, you know what, just leave this. राइट, सो यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ हमने मिस कर दी, वो थी ये ग्राउंड. सही है, दैट इज़ वाई जो डीसी में हमारे पास जो वोल्टेज की जो वोल्टेज गेन आ रहा था वो प्रोपोर्शनल था. सही है कि अगर हमारे पास डिफरेंस 1 का है तो गेन जो है हमारे पास 2 का आ रहा है. अगर हमारे पास डिफरेंस जो है वो बढ़ जाता है तो हमारे पास एक गेन जो है वो चेंज हो रहा था. सो ये बेसिकली ग्राउंड हम मिस कर गए थे. सो ये हम यहाँ लगा देते हैं. इट्स गोइंग टू बी ए कॉमन बिटवीन R6 एंड और ऑसिलोस्कोप. लेट्स रन दिस. हमारे पास यहाँ पे 10 वोल्ट्स भी पीक टू पीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट्स एंड ओके, वाओ, नाइस. So 5 वोल्ट्स पर डिवीजन के हिसाब से दिस इज 5, 5, 10, 15 and we are getting again 30 volts peak to peak, which means a gain of 5, 6.
to 6. So across each op amp we're getting a gain of 2 and 5, 6 to 30. Let's see, it's just a theory here. So let's see 0 volts way. Oh, sorry, no, 10 volts पे when a difference is 0 तो तब हमें क्या मिलता है ठीक है और there we have it. Let's try it out. Yeah, see, no gain at all, nothing, just a straight flat line because हमारे पास 0 multiplied by any number is 0, so we're getting a 0 here. There is no difference at all. But amazing thing ये है कि across each op amp we are getting a gain of 2, right? So 5, so 2, 2 and 2 is 6, and we're getting a gain of 6, which means 5, 6 is 30, and that explains something that हमारे पास जो 5 minus 1 था and we were getting 4, no, that was stupid. Okay, now अब हमने ट्राई करना है फ्रीक्वेंसी को, सॉरी नॉट फ्रीक्वेंसी, हमें इसे इसका duty cycle is 50%. 50% of the time it's going to be up and down. So what if हम इसके अंदर एक फेस शिफ्ट दें of 180 degrees. Okay, let's get a sine wave and again a sine wave and मैं क्या, let's just do this. Okay, this will most probably turn it upside down and see. Okay, nice. Again we are getting a gain here of 15, 15, 30. The input voltages are 10 to 5, I suppose, or 10 to 10. Yeah, these are 10 to 10, but अब हमारे पास जो है there is a phase shift. अच्छा, इसे अगर हटा के let's go for DC now. DC with AC. Okay, we already have VCC and VDD. I'm going to go with this, and let's see. 5 volt and volt, which it would have been easier अगर हमारे पास input voltages भी आ रहे होते, because then I can really compare them to this. Okay, so यहाँ पे जो last time हमने एक issue face किया था, ज़रा उसे दोबारा से cater कर लेते हैं to be sure. Okay, no more, and we will go for this. होपफुली इससे जो एक ग्राउंड जो मिस किया था उससे हमारे रिजल्ट्स पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा, और लेट्स सी कि वो हमारे किसी काम का है भी या नहीं. और -5 volts, interesting. It's -6 volts basically.
So two threes are six. Two threes are six. The gap between and two threes are six. Okay, that kind of explains it, but let's be sure. And now we have a gap. Yeah, three threes are nine. Gain of three for each of these. Achha, that is interesting. While we are in DC, we are getting a gain of one across each of these op amps. While we were in AC, we were getting a gain of two across each of these op amps. Okay? So that is because हमारे पास in DC we have a thing called let me refer it with your lab. Okay, no, yeah. अच्छा इससे ज़रा सा चलते हैं then I will explain to you what is actually happening here. ठीक है, we are done with this. Okay, don't forget this ground for those who are just listening to me right now. और यहाँ आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने एक क्लोज्ड गेन इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर बनाना है जिसका गेन है टू. ओके, सॉरी, बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बनाना है जिसका गेन होगा टू का. ठीक है, अभी हमारे पास गेन आ रहा है थ्री एंड सिक्स इन एसी एंड इन डीसी. सो कॉमन मोड जो इनपुट आप दे रहे हैं, जो कि मैंने अभी पहले आप लोगों को एज ए डीसी एंड एसी दिया था, सही है, वो अपनी मर्जी से आप लोग जो ले सकते हैं आप लें. ठीक है, और आपको ये प्रूफ करना है कि कॉमन सिग्नल्स जो आ रहे हैं उनको ये कैंसिल आउट करता है, जो कि मैंने अभी लैब में प्रूफ कर दिया है कि कॉमन सिग्नल्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे बिल्कुल. That is your difference amplifier because they do not have any difference at all. So both of these different input signals were cancelled out. अच्छा, अब आपको सिग्नल देना है, डिफरेंशियल सिग्नल, एक डीसी वोल्टेज 2 वोल्ट्स का. ठीक है, और कॉमन मोड आप अपनी चॉइस कर दें. ठीक है, और आपने ये बताना है कि आपके जो गेन है वो डिफरेंशिएट हो रहा है विद ऑल दीज क्या कहते हैं, थ्रू डिफरेंशियल गेन डिफाइंड बाय. ओके, या. सो आपके पास जो डिफरेंशियल सिग्नल्स आ रहे हैं, तो ये जो इनपुट आप दे रहे हैं और उनमें से जो डिफरेंशियल सिग्नल आपके पास आउटपुट पे आ रहा है और वो एक और ऑप एम्प पे जा रहा है, तो उसकी जो गेन है वो जो है आपके जो ऊपर की इक्वेशन है, सही है, उनमें किस तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं. सही, यू नो दीज 1k वी हैव 1 एंड प्लस 1 वी हैव 1. सो 1 + 1 2 into 1, और हमारे पास गेन आ रहा था 2 का. सही, सो दैट एक्सप्लेन्स हियर कि आप अगर 1 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस रख रहे हैं तो आपके पास 2k का गेन आ रहा है, 2 गेन आ रहा है. ठीक है, अच्छा, अब आपने साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करना है. ठीक है, दो साइन वेव्स जनरेट करनी है फंक्शन जनरेटर से जो कि 180 डिग्रीज फेज अपार्ट हैं. और क्या कहते हैं, अगर आपके फंक्शन जनरेटर में सिर्फ एक ही आउटपुट है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो ये फंक्शन जनरेटर है इसमें बेसिकली एक ही आउटपुट है. बेसिकली इसमें नॉट एक ही आउटपुट नहीं है, इसमें दो आउटपुट हैं. इसे कॉमन मोड में यूज़ करने का तरीका ये है कि इसे डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं. ओके, कॉमन मोड में आपको इसकी यूज़ करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे जो है वो इसे कनेक्ट कर दें. ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. कॉमन में आपके पास जो इसे आपने ग्राउंड कर दिया.
ओह सॉरी, मैंने कोई इंडिकेटर लगाया नहीं। ठीक है, मैंने क्या दिया है, sinusoidal wave, they are 180 degrees apart and see a beautiful sine wave. सो यहाँ पे हो क्या रहा है ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ऑब्वियसली ये मुझे, मैं आप लोगों को बना के सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ कि बट यू हैव टू हैव द कॉन्सेप्ट्स, द बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ दीज, कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा, तो आपने बेसिकली जो है, अगर आपके फिर भी फंक्शन जनरेटर में सिर्फ एक सिंगल साइनसॉइडल इनपुट आ रहा होता है, तो आप एक साइनसॉइडल इनपुट और एक डीसी सिग्नल अप्लाई कर दें, और जो कि उनका जो है वो कीप साइन वेव्स कॉमन मोड एंड डीसी इनपुट इक्वल। ठीक है, दोनों में मोड्स दोनों की जो वोल्टेजेस हैं वो इक्वल रख के। अच्छा, जो ये आपके पास इनपुट सिग्नल आप दे रहे हो वो नोट करना है, आउटपुट सिग्नल पे क्या आ रहा है, डिफरेंशियल गेन क्या आ रहा है, और कॉमन मोड जो आपके पास ACM है जिसका फुल फॉर्म था कॉमन मोड गेन, तो वो क्या आ रहा है। ठीक है, डिफरेंशियल गेन एंड कॉमन मोड गेन, जो लास्ट हमने लैब में भी जिस तरह से किया था। फेज कितना अपार्ट है, आपने नेगेटिव रखा हुआ है या कितने डिग्रीज का फेज शिफ्ट आपने ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास ऑफसेट जो वोल्टेज है वो बेसिकली वो उससे भी आप इसके क्या कहते हैं, फेज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, go through it, right, take another one of these function generators, go for positive। ठीक है, जैसे पहले हमने जो इसे कनेक्ट किया था। So I'm going to go for sine wave 0 degree 0 volts, and again we have a sine wave of so I'm gonna go for 180, not volts, uh, volts is fine I guess। Let's run this and you see हमारे पास जो है वो नीचे ये पॉजिटिव जो आपकी ओरिजिन है, ओरिजिन से नीचे ये जनरेट होगी। अच्छा, सो यू सी देर आर डिफरेंट आउटपुट्स फॉर डिफरेंट इनपुट्स। अच्छा, अगेन जैसे लास्ट लैब में ये आपने आंसर जो है वो फिल आउट करके देने। ओके, now if you guys have any questions, feel free to ask me. Okay, comment down below if you have any questions or if you need anything, if there's a confusion that you guys are facing, comment down below and I will try my best to solve your queries. Also, you guys can, approach me on WhatsApp. So yeah, that's just about it. With this, we come to the end of our lab. I wish you all best of luck. Take care and Allah Hafiz.